ओके हाँ जी हाय 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 वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। तो एक बार फिर से आ गए हैं एक अनोखे सेटअप के साथ जहाँ पे हम वेब डेवलपमेंट की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो आ, बहुत ही बेसिक, बहुत ही स्क्रैच लेवल पे है, लाइक HTML CSS जैसे टॉपिक को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो हम समझते हैं। ठीक है, और इफ़ यू हैव डाउट हु एम आई देन LinkedIn, you just need to tap in the LinkedIn and search about me. Like I am a student, third year guy, and as well as I am making videos, content, and making beautiful websites, backend segment. Okay, yes, it is true. I am a little bit new by here in the front end segment, but no issue. Let's do it. Let's do, and let's say learn something, like build something, learn something. Okay, so firstly, I would like to clear what we are going to learn here. Okay, so this is something. Okay, which is we are going to learn here in this video. This is specific series. Okay, first one is we are going to learn about the introduction of HTML. Okay, like what is HTML, why we need it, and okay, in this lecture. After that, we are going to learn about HTML as well as like their history and all significant terms. Okay, so modern web, about modern web structure of the HTML, and a lot of essential tools, a lot of essential tags and hierarchy. Okay, so without wasting a lot of time, let's move on in our VS Code compiler. Okay, VS Code, Visual Studio Code, where we are going to discuss about like what we are going to build it, what we are not build it. Okay, so this is just a simple like I'm removing it, as well as here this is just a repo, and you can visit, you can see this repo in my GitHub account. Okay, I'll put the link of the entire video. Okay, sorry, repo. So here I'm making a folder which is a HTML. Okay, and after that I'm creating a file which is a index.html. Okay, I'll explain you entire thing. Okay, so here is the something issue, and so uh, I'll ensure you, if in this entire video we are going to do some mistakes, a lot of mistakes. Okay, and you need to point that mistake. like मैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ करता हूँ, like recently मैंने यहाँ पे index.html लिखा। ठीक है, अब index.html like यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल ओपन हो गया। ठीक है, दिस इज समथिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक a HTML file, so you need to write their name, their file name HTML. Okay, which is a index.html, right? This is the thing. लाइक ये मेरा मोटो था, इसलिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक की। ओके, डोंट वरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मतलब एक सिंपल सा हमने फाइल बना लिया जिसका नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मीन ये बता रहा है कि यार ठीक है, ये जो फाइल है वो एच टी एम एल में है। ठीक है, अब आते हैं एच टी एम एल कोड लिखने पे। ठीक है, व्हाट इज द एच टी एम एल। अब थोड़ा एच टी एम एल को समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सो फर्स्टली सिम देखो ये इट इज़ जस्ट अ टेम्पलेट। ठीक है, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट। मैंने इस टेम्पलेट को ओपन किया एंड आई जस्ट सीइंग कि ठीक है। बिफोर गोइंग मोर, लाइक आई वुड लाइक टू add some things like what is the terms, like why we need it, and a lot of different stuff. Okay, like firstly I want to clear to you, HTML is basically, HTML stand for a hypertext markup language. Okay, it is a standard, it is the standard markup language for creating web pages. Like HTML describes the structure and content of a web pages by using a element and attributes. Okay, so if I talk about a definition, so the HTML definition in the web development is a, HTML is the foundation of web development. It provides the basic structure and content of a web pages. Okay, which is styled and enhanced using CSS and JavaScript. Okay, so now talk about the history of the HTML. Okay, like what is the history. Okay, so
HTML was first developed in 1989. Okay, 1989 में इसे पहली बार डेवलप किया गया टिम बर्नर्स ली एंड ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था यूरोप में, वहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। एंड दिस इज, इसका जो ओरिजिनल पर्पस था एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जहाँ पे जो कि इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो था, वहाँ पे इसको जो है ना, वहाँ पे सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बना सके, ठीक है, लाइक पब्लिक को भी शो कर सके एक यूआरएल के थ्रू। सो ये इसका ओवरऑल मोटो था। अब बात करते हैं यार सिग्निफिकेंस ऑफ HTML इन द मॉडर्न वेब। तो HTML is still the most important markup language like for web development in today era as well as entire web, okay। like हम ऐसा नहीं बोल सकते कि HTML को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। I know a lot of people are saying like HTML is a, okay, it is just a normal term, like I don't waste your time in the learning HTML, but trust me, HTML is the root of the web development, okay। HTML CSS and JavaScript is a रूट ऑफ द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की एक ऐसी रूट है, एक जड़ें हैं जिसको सीखना, जिसपे एक्सपर्टीज हासिल करना, आई थिंक एज अ वेब डेवलपर वी नीड टू ग्रैब इट, ओके। सो अब आते हैं HTML डॉक्यूमेंट के सेगमेंट में, ठीक है। लाइक HTML का जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, सबसे पहले वहाँ पे बात आती है फाइल की। जैसे कि हमने कहा .html इज द टर्म विच इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग फाइल, ओके। आफ्टर दैट लाइक अब कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली चार टाइप के एसेंशियल, मतलब चार टाइप के डॉक्यूमेंट जो हैं जो कि एसेंशियल है। लाइक आई एम, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट शोइंग यू। फोर टाइप इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, okay। This is term. Here you can see it is a just, it is a term which is a doc type. So doc type is this is a declaration, like ये ब्राउजर को बोलता है कि ये HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसका वर्जन क्या है, ठीक है। लाइक व्हाट वर्जन ऑफ HTML इज इन द डॉक्यूमेंट इज यूजिंग, ठीक है। सो अगला जो टर्म है, लाइक उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सा हम HTML यूज करते हैं, ठीक है। HTML एक टैग करके यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बताता है कि ठीक है, दिस इज द HTML, दिस इज द टर्म ऑफ HTML, ठीक है। लाइक HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद फिर इनसाइडर में अपन देखेंगे तो यहाँ पे वी हैव अ हेड, ओके। दिस इज एलिमेंट विच इज कंटेन्ड मेटा डेटा about the document, okay। Yes, it is right, it is a metadata, it is a term which is used for storing metadata in the inside the document, and such as a title and as well as their author names and a lot of things, okay। like यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेटा के अंदर कैर सेट करके UTF-8 इज अ टर्म विच इज यूज फॉर गिविंग फीचर्स, ठीक है। लाइक अगर इफ आई एम शोइंग यू, ओके, वेट अ मिनट, I'll show you, ठीक है। Here you can see I am showing same files which I am going, मतलब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा, ठीक है। अब हेड के अंदर मेटा डेटा ही स्टोर होगा, लाइक वी ऑल नो। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुंभज शुक्ला, ठीक है, टेस्ट सिस्टम, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब आफ्टर दैट हेयर लाइक दिस इज द थिंग, मेटा डेटा मीन दिस टर्म, ओके, understand। Now let's discuss about the body tag, okay। This is the element contain the main content of data, okay, such as heading, paragraphs, list and a lot of things, okay। Like body tag is the term which is used for storing main content of the data, main content of the website, okay। Like what we are going to add here, what we are going to represent here। So this is the entire thing, this is the entire structure of the HTML, okay। एंड HTML जो बनी हुई है वो इन्हीं चीज़ों पे बनी हुई है। फर्स्ट वी रिमूव इट, ओके। ये थोड़ा सा जार्गन से हम बाद में समझेंगे, डीपली समझेंगे मेटा डेटा के बारे में, मेटा डेटा के एक एक टर्म के बारे में, ओके। फर्स्टली वी नीड टू फिगर आउट लाइक द अबाउट HTML एंड देयर टैग्स, ओके। सो ये चीज़ें हो गई। अब हम समझते हैं लाइक ठीक है, लाइक व्हाट दिस इज HTML, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द टैग्स, ओके। टैग बेसिकली एक टर्म होती है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई ना कोई स्पेसिफिक प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए बनाया जाता है। वैसे ही HTML में ये जो है ऐसे कुछ
टैग्स बनाए गए जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, जिनका मतलब ही होता है यार ठीक है दिस इज द थिंग, ठीक है। लाइक आई एम टेकिंग एग्जांपल, दिस इज अ टर्म, ठीक है, दिस इज like I'm taking example of a h1, ठीक है, h1 like welcome in the my website, okay। As you can see I am writing here h inside the h1 tag, the thing is welcome in the my website, okay, done। I hope this is clear, okay। Up now you understand like this is the term, okay, and I understand, I hope you have some other doubts like what is the h1, what is the this tag, why we repeating again and again. So firstly we say to our compiler, okay, hey, let's say like when I write a tag which is a h1 like, so this is just a, this is opening tag and this is a closing tag. When we entered inside the tag a slash, okay, so that is closing tag, and when a tag is open then definitely and the another tag is going to end, ठीक है। वो जो टैग ओपन होगा वो आगे चल के कहीं ना कहीं क्लोज होने वाला है, इट इज ट्रू, ठीक है, इट इज फैक्ट। तो लाइक मैंने लिखा हेलो, ठीक है, मैंने लिख दिया h1 के अंदर, सो दिस इज द थिंग। अब h1 जो टैग होता है ना, h1 टैग यूज होता है सबसे हाईएस्ट, मतलब एक फुल साइज कमेंट लिखने के लिए, फुल साइज टेक्स्ट लिखने के, टाइटल लिखने के लिए, ठीक है। इट इज यूज फॉर राइट टाइटल। तो लाइक राइट लाइक मैं बताता हूँ, मुझे और भी वी नीड अ स्मॉल वर्ड, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ओके कुंभज, आपने देखा यू कैन सी देयर इज अ साइज इट इज अ वेरी स्मॉल, ओके। So this is the thing, and yeah, HTML is a very beautiful term. Like you can explore a lot of things here in HTML. Okay, so this is the thing. Okay, this like this we have a lot of tag. Like one is the paragraph tag. Okay, like here we are going to write something like lorem 10. Basically, I'll explore what is the lorem 10. Lorem 10 is a term which is used for writing a lot of text at the same time. Okay. Yeah, okay, maybe here there is some issue. No issue. Done. This is all about the HTML and ये basically HTML है। ऐसे HTML को लिखा जाता है। This is the structure। जो बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग में हम कंटेंट लिखते हैं जो कि हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है, यहाँ पे इनसाइड द वेबसाइट। हेड टैग होता है जहाँ पे हम मेटा डेटा ऐड करते हैं। मेटा डेटा मतलब कि एक ऐसी डेटा, एक ऐसा चीज़ जो कि डिसाइड करता है कि वेबसाइट कैसी होने वाली है, वेबसाइट का जो मेन सेगमेंट है, हेड सेगमेंट, वो कैसा होगा। लाइक यहाँ पे हेयर वी कैन ऐड द आइकॉन। लाइक यहाँ पे हमें कोई आइकन ऐड करना है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं, फेविकॉन आइकन के विच दैट इज टर्म हम इन फ्यूचर समझेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी। सो फॉर नाउ दिस इज द एंटायर स्टफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा टर्म्स है, एंड या गुड टू गो। आई थिंक इट इज ओवर। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द कीप एनहांसिंग योर स्किल्स। बाय बाय।